Hello and welcome to the EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 29th October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the new Prime Minister of UK, that is Rishi Sunak. I'm very sure you must have heard about his name in the news. Most importantly, he is in the news because he has his origin in India, right? So this is the reason why his name is quite in the news these days. So through this article, we'll learn about him. And the news is that the Prime Minister of India, that is Modi Saab, has spoken to UK PM Rishi Sunak. So Prime Minister Narendra Modi, on October 27, he held a telephonic conversation with the new British Prime Minister Rishi Sunak. So what this conversation was all about, तो किस तरीके से क्या क्या बात यहाँ पे हुआ है, how to strengthen the ties, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है. Now अब देखिए, you must have heard about, या आपको पता होगा कि how Rishi Sunak has been connected to India. ठीक है, how like there are news about his origin. और न्यूज़ में तो आप देखोगे कि न्यूज़ या आप देखोगे ट्विटर में इस तरीके का भी अभी खबर आ रहा है. Now that the Prime Minister of UK is Indian, तो now finally we can have the Kohinoor diamond. ठीक है, जो Kohinoor diamond है, now finally it will be returned to India. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं in reality. ठीक है, we should first accept first of all that Sunak is not Indian. Okay, he's proudly a British in origin, you can say. So even the Indian origin जो यहाँ पे thing है ना, it is a bit of a stretch. Okay, his parents are actually East African Asians है वो. Even his ancestors जो है और his great grandparents we can say were born in undivided India, which actually now it forms a part of Pakistan. Okay, so actually he seems more Indian to us because he's married to Narayan Murthy's daughter. I'm very sure you have heard about Narayan Murthy, who is the founder of the company called Infosys. तो उनका जो बेटी है, so she is the wife of Rishi Sunak. This is the reason why we can connect him to India, and also because of his skin color, right? But let's not forget that while आप कह सकते हो कि she has held on to her Indian passport, ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे ऋषि सुनक के केस में he has always been British, ठीक है, a national by birth. और आप देखोगे इनका जो birth है, studies है, everything was in Britain only, ठीक है. So much less can be said about his Indian origin currently, but then again, yes, we can say कि somehow he's related to India only. And also we can see that Indians are very, आप कह सकते हो कि at this point of time the Indians have become quite emotional. Why? Because you know that British were actually ruling us for a period of almost more than 200 years. तो इस केस में जो यहाँ पे जिस कंट्री ने हमें कॉलोनाइज करके रखा था, तो उस कंट्री में अगर कोई इंडियन ओरिजिन भी अगर वहाँ पे जाके पीएम बन जाता है, then definitely it can be termed as a good achievement for India, right? So this is the reason why the polity or the governance or you can say the administration at India are quite positive that we are going to enhance the ties with UK finally. ठीक है, the current context says that Prime Minister Modi had a telephone conversation with the new Prime Minister. Basically he congratulated him, ठीक है, the new British Prime Minister, that is Rishi Sunak, and during the conversation both the leaders have agreed on the importance of an early conclusion of a comprehensive and balanced ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड टाइज है ताकि उसे और भी स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है, जो बायलैटरल टाइज है ताकि उसे और भी स्ट्रेंथन किया जाए. दिस वाज व्हाई दिस कॉल वाज ऑल अबाउट. एंड यू कैन से दिस वाज द रीसेंट ट्विटर जो ट्वीट है, तो ये ट्वीट एक्सचेंज था बिटवीन द पीएम एंड ऋषि सुनक. ऑन वन हैंड इफ यू सी दैट ही कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन एज्यूमिंग द चार्ज एज द न्यू यूके पीएम, एंड ही हैज टोल्ड कि वी विल वर्क टुगेदर फॉर टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. हम देखेंगे इसके बारे में how the partnership of India and UK looks like. We also agreed on the importance of early conclusion of a comprehensive and balanced FTA. FTA का meaning है free trade agreement. So basically India and UK are currently working on आप कह सकते हो on devising a free trade agreement. So this is the reason why ताकि इसे जल्दी हो सके तो he is forced for it. And on the other hand you will find the reply from the UK PM, that is Rishi Sunak, ने कहा है कि he has thanked the Prime Minister Modi for his kind words as he has started his new role. So UK and India share so much. I'm excited about what our two great democracies can achieve as we deepen our security, defense and economic partnership in the months and years ahead. Okay, so basically Rishi Sunak as the Prime Minister of UK has also ascertained that yes, the cooperation or the ties between India and UK are going to be strengthened in times to come. But if you look at this reply, you'll find that this reply is not as an Indian, or this reply has got
नथिंग, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोई इंडियननेस का कोई उन्होंने सेंस नहीं बताया है. बेसिकली ही हैज शोन हिज लॉयल्टी टू हिज ऑफिस, ठीक है, ही इज शोइंग हिज लॉयल्टी टू हिज डेजिग्नेशन, एंड ही इज बेसिकली रिप्लाइड अंडर द कैपेसिटी ऑफ द यूके पीएम ओनली, ठीक है. ही हैज नॉट रिप्लाइड एज एन इंडियन और इंडियन ऑरिजिन. उन्होंने जिस तरीके से यूके का जो पीएम है उसी तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया है, ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो थ्रू दिस आर्टिकल एज आई टोल्ड यू कि विल ट्राई टू लर्न सम रिलेशंस के बारे में बिटवीन यूके एंड इंडिया. नाउ दैट ऋषि सुनक इज सो मच इन द न्यूज, तो हो सकता है कि यूके और इंडिया का जो टाइज है इसके बारे में कुछ भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो दिस इज द रीजन वाई. सो फ्रॉम द जीएस पेपर 2, दैट इज इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के परस्पेक्टिव से, विल ट्राई टू एस्टैब्लिश सर्टेन फैक्ट्स व्हिच विल हेल्प अस इन द एग्जाम टू राइट एनी आंसर व्हिच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यूके एंड इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है. तो पहले हम जानेंगे अबाउट द बायलैटरल रिलेशन के बारे में. सो इंडिया एंड द यूके शेयर अ मॉडर्न पार्टनरशिप बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज. हिस्टोरिकल टाइज, यू नो दैट वी यूज्ड टू बी अ कॉलोनी अंडर द यूके ओनली, राइट, अंडर द ब्रिटेन, जहां पे आप कह सकते हो कि इंडिया वाज एक्चुअली कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश फॉर मोर देन 200 years. So this is the reason why we actually hold so much in common. India's multifaceted bilateral relationship with the UK intensified with its upgradation to a strategic partnership in 2004. तो इनिशियली जो bilateral ties था with UK, it was actually strengthened and intensified to strategic partnership. तो currently आप देखोगे UK and India जो है, they are from like since 2004, India and UK are strategic partners. A joint declaration titled India-UK towards a new and dynamic partnership with which envisages annual summits and regular meetings between the foreign ministers. तो यहाँ पे basically जो ये joint declaration है, this actually like आप कह सकते हो कि provides for the annual meetings or the annual summits between, और आप कह सकते हो the high level meetings of the prime ministerial level, or you can say of the foreign ministers, okay. The civil, nuclear energy, space, defense and combating terrorism, economic ties, science and technology, education and culture are the areas of cooperative relation between India and UK. तो ये जो strategic partnership है, this is based on this particular areas only. The UK supports India's proposal for permanent membership of the UNSC, and UNSC के बारे में आपको बताया था, it is one of the principal organs of the United Nation, that is United Nation Security Council. तो Security Council में currently India अभी क्या है, India is one of the non-permanent members, but अब देखिए because of the dynamism, आप कह सकते हो कि जहाँ पे जो countries में या जो global perspective में जो changes हुआ है, तो India has always been wanting to be a permanent member, ठीक है, because India represents the developing world, India is one of the major economies of the world, and as such India ने हमेशा push किया है for the enhancing or for the broadening of the membership of the permanent membership of the UNSC, ठीक है. तो ये जो इंडिया का जो आप कह सकते हो कि ambition है, तो इसमें यूके भी हमेशा साथ देता है कि yes, India should be included as a permanent member of the UNSC, and it's also an important interlocutor for India and the European Union. अब देखो कि European Union and a group of 7 countries, there is G7 countries and G20 countries. तो G20 में yes, India is a member, but G7 countries में EU में India is not a member. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया का जो voice है, the voice is represented by UK only. Like आप कह सकते हो कि at such meetings or at such organizations. Now let's learn about the political relation. India and UK are bound by strong ties of history and culture. I told you about the 200 years वाला formula, right? So India has a high commission in London and 2 consulate general in Birmingham and Edinburgh. तो basically यहाँ पे मान लीजिए कि if any UK का person wants to visit India, then you should know that he or she has to apply for an Indian visa. तो यहाँ पे visa apply किया जाता है in such particular high commission के office में या consulate general में, जहाँ पे posting रहता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि जहाँ पे office hold करता है इंडिया के जो IFS ऑफिसर, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, राइट. और यूके का आप देखोगे हाई कमीशन है इन द न्यू दिल्ली, एंड देयर आर 5 डेप्यूटी हाई कमीशंस इन मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता. सो इफ एनीवन विशेस टू विजिट देयर कंट्री, देन in these places they can opt or they can apply for the visas. The UK has an Indian population of over 1.5 million, which we call as the diaspora, okay. So both countries are also members of the World Trade Organization and the Asian Development Bank. अब 3 presidents of India have paid state visit. यहाँ पे मैंने कुछ president के नाम के बारे में बताया है, who have visited आप कह सकते हो who had visited UK as the president of India, who represented India in various occasions. ये जो years है important नहीं है, but the names you can remember. There is Sarvapalli Krishnan, then Ramaswamy Venkataraman and Pratibha Patil in 2009. The Indian Prime Minister, including Manmohan Singh and Narendra Modi, have also paid a visit to the country during their tenures as the PM of India. And Queen Elizabeth II, जो आप कह सकते हो कि who had recently died, ठीक है,
तो जो लास्ट यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जिनका डेथ हुआ था, जिनके बारे में मैंने कवर किया था, ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, सो शी ऑल्सो पेड विजिट टू इंडिया 3 times in November 1963, then 1990 and finally 1997. तो there have been regular exchanges of visits at the prime ministerial level. यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स एंड स्ट्रेटेजिक टाइज आप कह सकते हैं, बहुत यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स इट ऑफन टेक्स बिटवीन इंडिया एंड यूके एट वेरियस लेवल. ठीक है. Now finally let's look at the economic engagement and the transactions between India and UK. So during the May 2021 का एक virtual summit में India and UK had launched an enhanced trade partnership which is known as the ETP. Now ये जो partnership है, ये जो आप कह सकते हो कि agreement that is launched to unleash the trade potential between these two countries. तो ऐसा माना जाता है कि India and UK are capable or have the potential of carrying out trade at huge level, ठीक है, at massive level. But क्योंकि जो trade है ये फिलहाल के level पर ये कम है, तो इसी को एनहेंस करने के लिए ये पार्टनरशिप यहाँ पे आप कह सकते हो कि लॉन्च किया गया था. और ट्रेड के केस में यहाँ पे मैंने कुछ डेटास के बारे में बता दिया है. दैट इज द टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूके stood at 17.5 billion US dollars. UK is India's 17th largest trading partner. So trading के केस में UK stands at the 17th position during the fiscal year 2021 to 2022. In January 2022, that is in the current year only, India and UK formally launched the negotiations for an ambitious free trade agreement. ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगोशिएशंस हैड स्टार्टेड, बात ऑलरेडी शुरू हो चुका था फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके, बट यहाँ पे इट कुड नॉट बी फाइनलाइज और इट कुड नॉट बी साइन बिकॉज ऑफ द, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंसेंसस हो गया, या बिकॉज ऑफ द आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब पॉलिटिकल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ यूके. सो द एफटीए एम्स टू इंक्रीज द बायलैटरल ट्रेड टू $100 billion. तो करेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज ओनली $17.5 billion. तो थ्रू दिस एफटीए इट इज बेसिकली envisaged or it is basically aimed that the trade will be leveling up to a level of $100 billion by 2030. But both these sides were expected to sign on the FTA by this Diwali only, but they missed the deadline due to lack of consensus and the transition in the UK political लीडरशिप. तो आपको पता होगा कि लास्ट मंथ में मैंने कवर किया था अबाउट द लास्ट यूके का पीएम दैट इज लीज ट्रस के बारे में. ठीक है, तो बोरिस जॉनसन, देन लीज ट्रस एंड नाउ फाइनली ऋषि सुनक. सो मच इंस्टेबिलिटी इज बेसिकली गोइंग ऑन इन द लीडरशिप ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी, राइट, व्हिच इज करेंटली लीडिंग इन यूके. तो इस केस में क्या हो जाता है, बेसिकली जो इस तरीके का जो एफटीए है इट इज नॉट बीइंग साइंड टिल नाउ. सो इसीलिए आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रू हिज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड ऑल्सो थ्रू हिज ट्वीट ही इज बेसिकली ट्राइंग टू बेसिकली आप कह सकते हो कि इज इंडिकेटिंग सो दैट ये जो एफटीए है विद इंडिया एंड यूके, ताकि जल्दी से साइन हो जाए. इन्वेस्टमेंट के केस में आप देखोगे इंडियन इन्वेस्टमेंट इन यूके के केस में इंडिया इन्वेस्टेड इन 99 प्रोजेक्ट्स में इंडिया इज इन्वेस्टेड एंड क्रिएटेड अराउंड 4830 न्यू जॉब्स इन द यूके. तो मान लीजिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट में इंडिया इन्वेस्ट करता है देन डेफिनेटली इट विल आल्सो कॉल फॉर द एम्प्लॉयमेंट, राइट. तो 4830 यहाँ पे न्यू जॉब्स हैज बीन क्रिएटेड बाय इंडिया टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई आफ्टर द यूएस इन 2020. सो 20 के केस में India has been the second largest source of FDI in the case of UK. So UK's investment in India, UK is the 6th largest inward investor in India, who basically invest in India through the FDI, and after Mauritius, Singapore, USA, Netherlands and Japan. So these are certain facts regarding the economic engagement between India and UK. The next article is about the recent announcement of the C295 aircraft, which is going to be jointly developed by Tata and Airbus in India. Okay. So the news says that Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of the Vadodara facility on October 38th. तो recently आप कह सकते हो कि कल के दिन में इसे ओपन किया जाएगा at Vadodara, which is a city in Gujarat. So Defense Minister Rajnath Singh, then Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel. So these names are important. याद कर लीजिएगा for prelims. Will be among those attending the function at Vadodara on October 30th. So this you can see in the picture is that of C295 aircraft, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. So this can be important for prelims and from mains it can be important from GS paper. There is security challenges and their management. It has been taken from the Indian Express. So through this achievement we can say India is moving to achieve a milestone in the highly competitive aviation industry across the world and boosting its Make in India या आत्मनिर्भर जो campaign है इंडिया का. This is finally going to be enhanced because of the production of the aircraft in India itself. So the government आप कह सकते हो कि on Thursday it announced that
a transport aircraft manufacturing facility for the Indian Air Force will be coming up at Vadodara. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. So initially आप देखोगे अगर आज के टाइम में देखिए currently जो deployed है in case of the Indian Air Force के लिए जो transport aircraft है which is meant for the Indian Air Force, this is the one that is Indian Air Force Avro 748. Now Avro basically is a British company. Now ये जो आप देख सकते हो on the picture. Now this is used to make transportation with respect to the Indian Air Force. तो इसी को replace करके अभी आ रहा है C295 because कहा गया है कि this is quite old, ये aging हो रहा है इसका. तो new technology के साथ currently we are developing the C295 aircraft. So the Airbus C295 military transport aircraft which is meant for the Indian Air Force. So you should know this is not an Indian innovation. Even though it will be produced in India, it will be manufactured in India, but जो यहाँ पर technology है it belongs to Airbus only. And this particular जो C295 aircraft है it is used by a number of countries across the world. So this particular aircraft is meant for the Indian Air Force का transportation के लिए will be manufactured by Tata Advanced System Limited. So this is a very proud moment for India because the company that is going to develop in India is Indian itself. ठीक है, that is which belongs to Tata. So Tata Advanced System Limited now important है in Gujarat, Vadodara city. The C295I is a new generation tactical aircraft in the light and medium segment. ठीक है, तो ये light and medium segment में होता है और क्योंकि जो size है it is quite compact in nature, so it can make you can say कि इनका जो landing है, the landing does not require a very large runway. This is a great advantage for the C295 aircraft. In September last year, 2021 में the government sealed a nearly 2100 crore rupees का एक deal sign किया था with Airbus Defence and Space to procure 56 C295 aircraft to replace the Indian Air Force, as I told you in the picture last about the Avro 748. तो इसे replace करने के लिए इंडिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया था Airbus के साथ एक 21,000 crore का रुपीस का एक डील. ठीक है, so it was a one of a kind agreement wherein a military aircraft would be manufactured in India under technology transfer by the private sector. तो देखिए जो 56 जो aircraft है, you can say 56 में से बस 16 will be delivered by Airbus. देखिए Airbus का जो manufacturing जो plant है तो उसमें से बस 16 ही आएगा, बाकी उन्हीं का टेक्नोलॉजी यूज करके हम यहाँ पे गुजरात में इसे मैन्युफैक्चर करेंगे. दैट इज जो 40 रिमेनिंग है वो 40 इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा. इंडिया में उसे आप कह सकते हो कि जो एयरबस का जो टेक्नोलॉजी है उसी को यूज करके वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इन गुजरात. तो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. So about this particular C295 aircraft के बारे में, so the C295 MW is a transport aircraft of 5 to 10 tons. ठीक है, जो कैपेसिटी है 5 to 10 tons का कैपेसिटी which can be used for tactical transport of about 71 passengers or 50 paratroopers. तो this many like आप कह सकते हो कि passengers or paratroopers who belong to the Indian Air Force can be carried through this particular transport aircraft, and also for logistic operations to locations that are not accessible by heavier aircraft. As I told you, this belongs to the medium or the small जो कैटेगरी है इसमें belong करता है. तो इसीलिए जो लैंडिंग है it can be easily done where there is आप कह सकते हो पे प्रॉपर एक रनवे मिसिंग है वहां पे भी इसे लैंडिंग किया जा सकता है. ठीक है, द एयरक्राफ्ट इज अ न्यू जनरेशन टैक्टिकल एयरलिफ्टर इन द लाइट एंड मीडियम सेगमेंट व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. द C295 एयरक्राफ्ट कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इट डज नॉट रिक्वायर फुल फ्लेजेड वेल प्रिपेयर्ड रनवे. इट इज a short or an unprepared airstrip is sufficient for its landing and also its takeoff, and has short takeoff and landing. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि STOL कैपेबिलिटी कहा जाता है. So because it is coming under the light and medium segment. The C295 aircraft has conducted multi-role operations worldwide under all weather conditions. तो इंडिया में आप कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी है ये it is coming for the first time, but in the number of countries it has played a significant role. ठीक है, in all weather conditions, जितना भी extreme condition क्यों ना हो, it has been played a significant role, which includes day and night combat missions. ठीक है, and in all extreme weather conditions such as desert में हो गया, maritime environment में हो गया, it has been able to prove its worth. The C295 aircraft would be replacing the Indian Air Force fleet of Avro aircraft. That is the Avro 748 के बारे में आपको बताया था. That were procured in the 1960s में इसे लिया गया था, तो currently इसे replace किया जाएगा. And the Indian Air Force will become the 35th C295 operator worldwide. So already 34 countries are currently using this particular technology of C295. इसी टॉपिक के बेसिस पर prelims practice question please answer in the comment section.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग. ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी मैंने कवर किया था अबाउट दी स्टबल बर्निंग के बारे में, विच वाज रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ द एग्रीकल्चरल वेस्ट. तो ये भी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल वेस्ट थी, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो दिस न्यूज इज बेस्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश. तो जहाँ पे कहा गया द तवांग कृषि विज्ञान केंद्र इट ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से इसे मैनेज किया जाएगा थ्रू वर्मी कंपोस्टिंग एंड क्लीन कल्टिवेशन एंड the importance of maintaining good health and hygiene practices at the Gyankhar village in Tawang district. ठीक है, ये न्यूज़ अपने लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव, बट वर्मी कंपोस्टिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स फ्रॉम मेंस जीएस पेपर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग. अगर आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा. सो बेसिकली आप देख सकते हो जो रेड वर्म है, ये रेड वर्म यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट. सो वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द अर्थ वर्म्स कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, मान लीजिए जो राइस हस्क हो गया, या मान लीजिए जो वेजिटेबल का लेफ्ट ओवर्स है. ठीक है, तो ये सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है विच आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, नाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड विद द यूज ऑफ अर्थवर्म इनटू मैन्योर, एंड यू नो दैट मैन्योर इज क्वाइट यूजफुल इन फार्मिंग. ठीक है, विच इज रिच इन हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट. वर्मी कंपोस्टिंग इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट बाय यूजिंग अर्थवर्म. तो आप देख सकते हो नॉर्मली यहाँ पे रेड अर्थवर्म हम यूज करते हैं. दे आर कॉमनली फाउंड लिविंग इन सॉइल. तो यहाँ पे जो ये वर्म है इसे पाना भी इतना मुश्किल नहीं है. इट इज इजीली अवेलेबल इन द केस ऑफ द फार्म्स वगैरह यहाँ पे पाया जाता है इन सॉइल, फीडिंग ऑन बायोमास एंड एक्सक्रीटिंग इट इन द डाइजेस्टेड फॉर्म. तो ये जो एक्सक्रीटा है ना, ये एक्सक्रीटा को हम यूज करते हैं एज कंपोस्ट. सो वर्मी कल्चर मीन्स वर्म फार्मिंग. इनफैक्ट ये जो वर्म है वर्मी कंपोस्टिंग, तो ये वर्म है ना, ये टर्म ही आया है वर्म से ही. ठीक है, वर्म फार्मिंग या वर्म कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग बाय वर्म. अर्थवर्म्स फीड ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स एंड गिव आउट एक्सक्रीटेड फॉर्म ऑफ वर्मी कास्ट के फॉर्म में देता है, दैट आर रिच इन नाइट्रेट्स एंड मिनरल्स सच एज phosphorus, magnesium, calcium and potassium, which is actually beneficial for the growth of plants, which can be used for the cultivation of plants, right? So ये जो vermicast, that is nothing but the manure only. Now these are used as fertilizers and enhance soil quality जहाँ पे we want to practice organic farming. So in case of vermicomposting, it comprises basically of two methods. एक हो गया bed method और एक हो गया pit method. So bed method is a relatively easy method in which beds of organic matter are prepared. यहाँ पे bed prepare किया जाता है, and in this particular pit method, the organic matter is collected in a cemented pit. ठीक है, तो एक बेसिकली ग्राउंड पे या सरफेस पे एक पिट कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसमें हम कंपोस्टिंग करते हैं. हाउएवर दिस मेथड, दैट इज द पिट मेथड, इज नॉट प्रोमिनेंट एज इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स ऑफ पोर एडेशन एंड वाटर लॉगिंग. तो यहाँ पे जो पिट मेथड है, यहाँ पे वाटर जो है इट कैन नॉट बी इजीली ड्रेन, एंड ऑल्सो द एयर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द सफिशिएंट मैनर. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये बेटर मेथड जो है इट इज मोर प्रेफरेबल. सो दिस यू कैन सी इन द पिक्चर किस तरीके से किया जाता है. द रॉ मटेरियल जो है दैट कैन बी कंपोस्टेड or vermicomposted are food waste, animal waste, agro waste, that is the rice husk, the stubble that I told about in the previous videos, and finally the plant waste. ठीक है, तो ये सारा जो है these are basically what? These are biodegradable waste. ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह रहता है, then definitely will not be able to convert them into manures. But if it is absent in the non-biodegradable waste like plastic, then definitely we can convert them with the help of earthworm. And finally जो यहाँ पे output रहता है, it is manure which can be useful for organic farming. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Arunachal Pradesh again, about the governor of Arunachal Pradesh, that is B.D. Mishra Sahab. तो उनका tenure जो है as governor it has finally ended. The 5-year term of Governor B.D. Mishra ended on the 3rd of this month. So from this article you should also know that the tenure of a governor it is 5 years. ठीक है, and आगे हम ये भी देखेंगे he is appointed by the president. ठीक है, now this can be important for prelims, GS paper 2 perspective from the Indian polity and from the Arunachal perspective से important हो सकता है, and has been taken from the Arunachal Times. So this article will try to learn about Mr. B.D. Mishra के बारे में. So the news says that the governor of Arunachal Pradesh, that is B.D. Mishra, his 5-year term is finally ended on the 3rd of October. So Mishra was sworn in as the 19th governor of Arunachal Pradesh on 3rd of October 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था. So इसीलिए 2022 के अक्टूबर में उनका टर्म खत्म हो जाता है. ठीक है, so he was appointed as governor on 30th September 2017 by the then president
of India, Ramnath Kovind. Okay, so today's article you should also learn that the governor is appointed by the president. On the day his tenure ended, that is on the 3rd of October, he was also given the additional charge of Meghalaya. So currently he is holding the charge of Meghalaya as the governor and was sworn in as the governor of the state on 4th of this month, that is on October itself. Until his replacement is appointed, जब तक उनका रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ जाता है, दैट इज बीडी मिश्रा का जो नया रिप्लेसमेंट होगा फ्रॉम द सेंटर्स साइड, जब तक वो नहीं आ जाते, ही विल, दैट इज बीडी मिश्रा विल कंटिन्यू टू बी द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज पर द लेड डाउन नॉर्म्स या रूल्स. ही कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विशेस. ठीक है, तो कभी कभी अगर मान लीजिए कि इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिलेइंग इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, देन द करेंट गवर्नर विल ओनली, आप कह सकते हो कि कंटिन्यू बीइंग द गवर्नर. ऑल्सो इन द पास्ट गवर्नर्स लाइक माता प्रसाद एंड जे सिंह also stayed way beyond their tenure, said a Raj Bhavan ka official ne. So let's learn a little about his early life as well. So Mishra, he retired from the Indian Army. So you know he's termed as the General Bidhi Mishra. So he used to serve in the Indian Army, and he retired from the Indian Army on 31st July 1995 as a brigadier. After an illustrious career in the forces, beginning as a permanent, so he started in the Indian Army as a permanent regular infantry officer on 17 December 1961. He was the commander of the NSGs, that is National Security Guards, Black Cat कमांडोज काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स. ठीक है, तो ये जो टास्क फोर्स है, दैट इज द काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स. नाउ इट हैड पेनिट्रेटेड, और यू कैन से इट हैड बेसिकली हेल्प इन द रेस्क्यू मिशन ऑफ अ हाईजैक फ्लाइट. ठीक है, सो इट पेनिट्रेटेड अ हाईजैक एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरलाइंस एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द रेस्क्यू ऑपरेशन एट द राजा संसी एयरफील्ड एट अमृतसर इन पंजाब ऑन 24th of April 1993. तो 1993 में इंडियन एयरलाइंस का जो ये फ्लाइट हाईजैक हुआ था, तो इन रेस्क्यूइंग द पैसेंजर्स and the crew members, so General B.D. Mishra, he played a very significant role. So all the 124 travelers and the crew members were rescued in the operation after the elimination of the hijackers. तो उनको eliminate कर दिया गया था without any casualty or damage of the travelers or the crew members, which is believed to be one of the greatest achievement of B.D. Mishra in the Indian Army, and this is the reason why Mishra also earned the Prime Minister appreciation for his role in ending the hijack crisis. Okay, so these are certain facts about his life. It's a topic के basis पर discipline practice question. Please answer in the comment section. So these are the two questions that I had asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the questions are, the first question is about the disinformation law. Now this disinformation law has been passed by the government of Turkey or Turkey. And this 8 AM sports scholarship jo had is a joint initiative between the Gurgaon based VR Industries Private Limited and the NGO, one of the leading NGOs of the state, that is Helping Hands. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.